ओके सो हेलो हाय नमस्कार उन सभी को मेरा प्रणाम जो आज मेरे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है प्रशिल बड़वाइक। मैं यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को सीआरई पढ़ाने वाला हूँ एंड हम सब मिलकर यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई विल क्विकली रिकैप व्हाट वी स्टडीड इन यस्टरडेज क्लास। सो वी हैव सीन बैच रिएक्टर एंड वहाँ पे हमने पढ़ा था कि द इक्वेशन द डिजाइन इक्वेशन वाज सिमिलर टू द rate equation, right? So what and all the equation we derived for using rate equation for zero order reaction, first order reaction or second order reaction, all were same as the batch reactor. Like so batch reactor में जो equation आएंगे that will be same as what we derived earlier using rate expression. Okay, यहाँ तक आए थे. Then we started with series reaction जहाँ पे हमने पढ़ा था A gives B gives C using K1 and K2 as a rate this rate constants. Okay, so वहाँ पे हमें पता चला था कि B was our desired product, right? B was our desired product and इसका concentration we need to maximize. Okay, so we have seen the concentration profile. How was the concentration profile there? CA का concentration क्या होगा? It will decrease because it is a reactant. उसके बाद B will start form and it will be having maximum concentration where dCB by dt is equal to 0, right? And then its concentration will decrease and concentration of C कैसे होगा? It will continuously increase. So we need to find out this optimum time. Using this optimum time, what we'll do? We'll maximize the concentration of B. We'll stop the reaction at that point and we'll get maximum concentration. Okay, so in this we got what is the equation for CB? CB is equal to Ca naught K1 divided by K2 minus of K1, right? E to the power minus K1t minus e to the power minus K2t. Okay, in order to calculate CB max, we need to do CB max is equal to, we need to put optimum value. T optimum is equal to what? That was 1 upon KLM, logarithmic mean. Okay, so logarithmic mean it is like ln of K1 divided by K2 divided by K1 minus of K2, or it is ln of K2 by K1 divided by K2 minus K1. Okay, so we'll use this here, and if you substitute this value here, so you will get Cp max is equal to Ca naught K1 divided by K2 minus of K1 e to the power minus K1 into T. So it is ln of K1 upon K2 divided by K1 minus of K2. Okay, minus e to the power minus K2 into what is T optimum? That is ln of K1 upon K2 divided by K1 minus of K2. So you know what is equation? E power ln x is equal to x, right? So using this property, what we will do? This is Ca naught K1 divided by K2 minus of K1. यहाँ पे you will be having K1 upon K2 to the power this is K1. So it will be minus of K1 divided by K1 minus of K2, right? Here this will be an equation. ये तुम्हारा power में चला जाएगा. Similarly, you will be having minus of this will be E will not be there. So it is K1 minus K1 divided by K2 e to the power minus K2 divided by K1 minus of K2. You take out this first term as common from this both. So you will be having Ca naught K1 divided by K2 minus of K1. This is K1 divided by K2 to the power minus K1 divided by K1 minus K2, and here it will be 1 minus of K1 by K2 will be as it is. यहाँ पे your this term will be in denominator here. So you will be having K1 minus of K2 divided by K1 minus K2, right? Abhi you are having this same term, so it will be cancelled. Power will be 1. Now, and if you solve this, you will get K2 minus K1 divided by K2, right? So this K2 here K2 minus K1 is here, and here K2 minus K1 will be there. That will cancel. So we'll having Ca naught K1, and in bracket we will be having K1 divided by K2 to the power minus K1 divided by K1 minus of K2, right? This will be, and here you will be having K2 1 by K2 will be there, right? So ये K2 यहाँ का था. Okay, this K2 will be there. So it is CB max is equal to, you will be having Ca naught, and this K1 upon K2 will be there to the power 1 here. Okay, so K1 upon K2 to the power
1 and this is minus. Okay, so what will be your overall equation? K1 upon K2 to the power 1 minus of K1 upon K1 minus of K2. Okay, if you multiply it here, you will be having the same equation, CB max divided by CA naught is equal to K1 upon K2 to the power what, minus K2 divided by K1 minus of K2. If you take it inverse, so you will be having CB max upon CA naught is equal to K2 by K1 to the power K2 divided by K1 minus K2. Okay, so this was your CB max equation. Okay, now ये सब हो गया था. I have given you one question जो होमवर्क दिया था. So I hope you have solved that question. उसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक विल बी पैरेलल रिएक्शन. ओके, टाइप ऑफ मल्टीपल रिएक्शन. सो मल्टीपल रिएक्शन type 2 will be your parallel reaction. This is also called as competitive reaction. Okay, now what happens in competitive reaction? Unlike series reaction, you are having A gives R and here A gives S. Here rate constant is K1, here it is K2. Order of reaction is N1 and order of reaction is N2. Okay, so out of these two, your R will be desired product. Okay, what do you mean by desired product? Desired product, and this is S is undesired product. Okay, so desired product is what we want something from that reaction. Okay, जो हमारा expected product that is your desired one, and this one is undesired, that is S here. So यहाँ पे क्या होगा? Your A will distribute into R and S based on your K1 and K2. So what I told you, this CA0 is initial concentration. It will distribute in CR and CS, right? Plus there will be CA. रहेगा, unreacted CA will be there. So this is your total equation. So it will distribute. What I am saying, this CA1 will, CA0 is distributed into CR and CS based on what? Based on K1 and K2. Okay, अभी यहाँ तक हम आ गए थे. Now हमारा next point will be, wait. Okay, so what will be your assumption? Assumption will be क्या रहेंगे? पहला तो फिक्स रहेगा, it is isothermal, because we are seeing here what is variation with respect to concentration or composition. So this is isothermal. Second will be constant volume batch reacting system. Okay, so this is CVRS. Then you will be having what? You need to write down the equation for rate of consumption of A. So you will be having elementary kinetics, right? Elementary reaction. Then उसके बाद you will be having batch reactor. Okay, that will be 4 batch reactor. We are carrying out this reaction in batch reactor. So this will be your assumptions. Abhi, please tell me what no will products be, at initial stage. what? No products at initial stage. Okay, so pure feed. Okay, Yes. so you want to tell feed is your pure. Okay, Abhi, now tell me what is the consumption of this. Write down the equation for consumption of A, that is minus RA. जहाँ पे कंजम्पशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव. कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है? K1 में हो रहा है इंटू CA. दूसरा कंजम्पशन हो रहा है तुम्हारा K2 इंटू CS. ओके, CA विल बी देयर. दोनों तरफ कंजम्पशन हो रहा है. इज इक्वल टू व्हाट? सही है, इट इज K1. ओके, दैट विल बी प्लस, बिकॉज दोनों तरफ कंजम्पशन हो रहा है. यहाँ पे भी तुम्हारा कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारा कंजम्पशन हो रहा है, एंड वी आर राइटिंग फॉर कंजम्पशन. तो दो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा. K2 विल बी देयर into CA. Okay, what is minus RA? It is dCA by dt. Now please calculate what will be your equation for CA. Meanwhile I'll write here, suppose you have minus dCA by dt is equal to K into CA, that is first order reaction. तो तुम क्या लिखते थे?
CA इज इक्वल टू CA नॉट ई पावर माइनस KT। अभी क्या रिप्लेस हुआ है, बस K1 K की जगह तुम्हारा K1 प्लस K2 आ गया है। ओके, सो व्हाट विल बी योर इक्वेशन? इंटीग्रेट भी कर सकते हो बट आई विल राइट इन शॉर्टकट CA नॉट ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 T। सबका इक्वेशन आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। नाउ अभी मुझे इक्वेशन ये तो आ गया, इसको लॉन के टर्म में लिखो। ओके, व्हाट विल बी योर लॉन CA डिवाइड बाय CA नॉट। इसको माइनस साइन दे देंगे, यू विल बी हैविंग K1 plus K2 into T। Now you plot the graph between y is equal to m into x. You will be having this kind of equation, straight line will be there, right? Here on x-axis you will be having T, and on y-axis minus ln of CA divided by CA naught. This CA divided by CA naught. Okay, so you will be having this equation with slope K1 plus K2। अभी तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, तुम्हें CA naught पता है, तुम्हें CA पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। यू कैन प्लॉट दिस ग्राफ एंड यू कैन हैव दिस इक्वेशन। यहाँ पे तुम K1 प्लस K2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी मैं तुम्हें बोलूंगा व्हाट इज, अभी K1 प्लस K2 तुमने निकाल लिया, अभी मैं बोला हूँ तुम्हें कि कैलकुलेट करो K1 एंड K2। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए वी नीड टू राइट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। सो डिजायर्ड प्रोडक्ट इज व्हाट? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज प्लस R and the undesired will be plus R guess। okay, अभी व्हाट इज दैट इक्वेशन? रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं एंड फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, तो फॉर्मेशन होगा तो पॉजिटिव। कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है? K1 into CA में, बरोबर। R is forming using K1, this K1 into CA, K2 into CA, right? अभी you take the ratio of these two, क्या आएगा? Your rate of formation of S divided by rate of formation of R by S, right? R by S is equal to K1 divided by K2, right? एंड मुझे पता हो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R क्या होगा? DCR by DT, प्रोडक्ट है पॉजिटिव साइड, DCS by DT। अब रेशियो लोगे तो योर DCR by DCS। इसको कैसे लिख सकते हो तुम? हाउ कैन यू राइट? CR minus CR naught divided by CS minus CS naught। आ गया? तो दिस विल बी योर इक्वेशन। बट हमारा एजम्पशन क्या है? फीड इज प्योर, सो CR naught is equal to 0 and CS naught is equal to 0 अगर एजम्पशन दिया है तो, अदरवाइज नहीं। तो दिस विल बी इक्वल टू CR डिवाइड बाय CS। ओके, अभी you plot the graph between concentration of R and concentration of S, CR versus CS। so what will be your graph here? That will be K1 upon K2 is equal to CR upon CS, right? so when you draw the graph CR versus CS, CR is equal to क्या होगा? K1 upon K2 into CS, right? तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आएगा एंड स्लोप विल बी K1 upon K2। आ गया सबको? अभी what I am telling, K1 is equals to K2, this is first graph। now I am writing for second, K1 is equal to K2, so what will be there? K1 upon K2 is equal to 1। स्लोप 1 होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R। मतलब तुम्हारा डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, दिस एंगल विल बी 45, राइट? समझा सबको? यस। अभी व्हाट इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट? दैट इज R। ओके, R तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, तो तुम्हें डिजायर्ड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू इंक्रीज K1 और K2। टेल मी। K1। okay, so you will be having slope greater than 45 रहेगा, एंगल will be greater than 45। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? एंगल कितना रह सकता है एंड एंगल कैसा रहेगा? ओके, दिस इज योर CR एंड दिस इज योर CS। ओके, तो एंगल विल बी ग्रेटर देन 45, वहां पे K1 अपॉन K2 विल बी ग्रेटर देन 1 एंड योर फॉर्मेशन ऑफ CR विल बी हायर। तो आई विल रीराइट, आई विल रीड्रॉ दिस
कैसे? ओके, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, सो दैट यू विल बी नॉट हैविंग एनी कंफ्यूजन व्हेन यू रीड लेटर। ओके, सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल बी देयर। अभी ये तो हो गया। अभी फोर्थ ग्राफ क्या रहेगा? यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फोर्थ ग्राफ। सपोज योर फीड इज नॉट प्योर, फीड इज नॉट प्योर, दिस डजंट मीन तुम्हारा प्रोडक्ट है उसमें। ओके, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी रह सकती है, इनर्ट रह सकता है। ओके, सो आई एम सेइंग फीड इज नॉट प्योर, तो इम्प्योरिटी रहेगी। ओके, एंड इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया कि फीड इज इम्प्योर बट इट हैज प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंस? फीड इज impure मतलब and feed contain product a bit amount of product। ओके, सो impurity रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा CS नॉट इज इक्वल टू CR नॉट इज इक्वल टू 0 है। दिस इज नॉट, यहाँ पे है वैसा CS नॉट इज इक्वल टू CR नॉट इज इक्वल टू 0। ये दोनों का डिफरेंस समझो। ओके, अभी मैं बोल रहा फीड इज नॉट प्योर एंड इट हैज प्रोडक्ट, तो तुम इनर्ट छोड़ दो, अभी वहाँ पे तुम्हारा CS नॉट और CR नॉट रहेगा। सो तुम्हारा इक्वेशन क्या आया था? CS माइनस CS नॉट डिवाइड, ऐसा नहीं था, उल्टा था। ओके, दैट विल बी CR माइनस CR नॉट डिवाइड बाय CS माइनस CS नॉट इज इक्वल टू क्या था? K1 upon K2। नाउ प्लीज प्लॉट द ग्राफ हियर। सो यू विल बी हैविंग इनिशियल concentration that is C, x axis CS will be there, CS नॉट, यहाँ पे CR नॉट will be there, and this graph will start from this location for this is K1 upon K2, right? Here you will be having CR, here you will be having CS. Please draw all these four graphs. Okay, should I move ahead? Yes, sir. Okay, now okay, तुम draw कर लो। हाँ, now what was your rate of formation of R? The rate of formation of R was this is equal to dCR by dt। समझा? is equal to what? K1 into CA। now please calculate concentration of R। क्या आएगा? dCR is equal to K1 into CA। CA की वैल्यू क्या थी? CA नॉट, okay, no, that is CA naught e power minus K1 plus K2 into T, और यहाँ पे तुम्हारा रहेगा K मल्टीप्लाई था पहले से। ओके, सो दिस विल बी योर इक्वेशन। अभी इसे क्या करोगे तुम? इंटू dt भी आएगा, इधर इसको ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे भी dt आएगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेट करो। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 CR का कॉन्सेंट्रेशन वॉज CR नॉट, एंड टाइम t इज इक्वल टू t और कॉन्सेंट्रेशन इज CR इज इक्वल टू CR, राइट? अभी इंटीग्रेट करो, यू विल बी हैविंग एन इक्वेशन CR माइनस CR नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन K1 CA नॉट e पावर माइनस K1 प्लस K2, ओके, इंटू T dt, बरोबर है? फ्रॉम लिमिट 0 टू T। इसे इंटीग्रेट करो, यू विल गेट CR माइनस CR नॉट इज इक्वल टू K1 CA नॉट। इंटीग्रेट करोगे क्या? e पावर x का e पावर x रहता है, माइनस K1 प्लस K2 T डिवाइडेड बाय दिस विल बी माइनस K1 प्लस K2, कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ पे लिमिट पुट करो 0 टू T। सो यू विल बी हैविंग इक्वेशन K1 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, K1 अपॉन K1 प्लस K2, यहाँ पे माइनस साइन था। ओके, तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल चेंज दिस लिमिट यूजिंग दिस माइनस साइन। सो आई विल बी हैविंग लिमिट T टू 0, पहले 0 पुट करोगे तो यू विल हैविंग 1, एंड जब T पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। आ गया? ओके, सिमिलरली using this same equation, can you please find out equation for DCS? Like what will be your equation for CS minus CS naught? That will be equal to K2 divided by K1 plus K2, and here CA naught as it is, यहाँ पे भी CA naught रहेगा। ओके, 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। सबको आ रहा है?
These are important equation. First equation, second equation. हो गया? Okay. Should I move? Raise your hand if I'm asking something. Okay, that will be helpful. Okay. अभी मुझे बताओ what will be your concentration at time t is equal to infinite. Pure feed and time t tending to infinite. So what is your CR and what is your CS? CR will be e power minus infinity is 0, बरोबर. So you will be having CR, that is K1 divided by K1 plus K2 CA naught. And what is CS? CS will be K2 divided by K1 plus K2 into CA naught. And at time t is equal to 0 you will be having maximum concentration. Okay, parallel reaction में क्या होगा? At time t is equal to infinite, you will be having maximum concentration. The CR will be CR maximum, CS will be CS maximum. Parallel में ऐसा है. And in series reaction what you had T optimum which was coming in between 0 to infinite, right? ये question भी important है. Okay. Now whenever I'm saying कि suppose you have time t is equal to infinite, तो तुम्हारा CA naught क्या होगा? CA naught will be नहीं, CA will be nearly equal to 0, बरोबर. Anyone has any doubt here? CA will be equal to 0. It is tending to 0. Okay. So abhi if I am saying please draw the graph between concentration versus time. So what will be your concentration profile? Using this equation, CA naught is equal to CA plus CR plus CS. Okay, यहाँ पे your CA is 0 at time t tending to infinite. Okay, this will be your profile. Concentration, that may be CA, CS or CR. Here it is time. So please tell me, suppose if there is no CR and CS here initially, so your maximum concentration will be C. This is CA naught, right? This will exponentially, or I'll not say exponentially, this will decrease. Okay, this will decrease. This is equation for CA. Now what will be your value? This is what? CR max. Okay, CR max. What will be your CS max? CS max क्या रहेगा? above रहेगा, below रहेगा? K1 पे Below. depend करता है. It depends on K1 and K1 K2. में Okay. total. Suppose if K1 is equals to K2, then इस condition में your CR max is equal to CS max, right? CR max is equal to CS max रहेगा. Okay. And मुझे पता तुम्हारा टोटल क्या है. यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा? CA naught is equal to CR plus you will be having CR, right? तो तुम्हारा CR क्या रहेगा? CR is equal to CS is equal to क्या रहेगा? CA naught divided by 2. Okay. तो your this CA naught, ये तुम्हारी लाइन नहीं रहेगी. This will be here. Suppose ये wait. Suppose here this is a total length. So इसके क्या रहेगा? हाफ में आएगा. So this will be your CR max is equal to CS max. समझा सभी को? When K1 is equal to K2. समझा? Please raise your hand. हाफ रहेगा. Okay. And your concentration of CR and CS will tend towards maximum value. So your this profile will be, wait, I'll draw in different color. This will be your profile. Okay. CS is equal to CR is equal to this tending to 0.5. If suppose if this length is 1. समझा?
Anyone has any doubt here? Okay, should I move? Okay. So please write. This was GATE 2016. No, GATE 2000. Yeah, it was 16. Draw the concentration profile when K1 is equal to K2. Okay. So this was your GATE question. Abhi, suppose if K1 is not equal to K2, not equal to K2 and वहां पे your K1 is greater as compared to K2, तो तुम्हारी प्रोफाइल क्या रहेगी? This will be your concentration, right? You write as it is Ca, Cs, Cr. ये क्या रहेगा? Time. What will be your Ca naught? This is your Ca naught. This will continuously decrease. What will be your Cr max? That will be somehow here. Okay. Cr max. And what is this Cr max? This is equal to K1 divided by K1 plus K2 into Ca naught. अभी मुझे बताओ दिस कंडीशन प्रिवेल्स हियर, तो K1 इज ग्रेटर, तो तुम्हारा Cs मैक्स नीचे आएगा. Cs मैक्स इज इक्वल टू K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 इंटू Ca नॉट. अभी मुझे कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल ड्रॉ करके बताओ. दैट विल बी, दिस इज योर Cr प्रोफाइल, दिस इज योर Cs प्रोफाइल. ओके, कुछ लग रहा है नया सीख रहे हो करके? Okay, this is your profile, and at any instant, at any time t is equal to t, क्या रहेगा तुम्हारा? Ca naught is equal to Ca plus Cr plus Cs. Generally Ca is equal to 0 रहेगा at time t is equal to infinite. Okay, I am writing for time t is equal to t, so this equation will be there, and for time t is equal to infinite, Ca naught is equal to Cr plus Cs, और ये भी क्या रहेगा? मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम. ओके, समझा सभी को? Okay. Abhi, if I am saying draw the concentration profile, तो तुम अभी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, पहली कंडीशन, A gives R, it is giving yes, K1 is equal to 1, K2 is equal to 3. Please draw the concentration profile. This is Ca naught is equal to 1. This is your time. क्या आएगा? Concentration of A will decrease. बरोबर? What will be your R max and S max? Kaushik? R max, CR max will be 1/4 into Ca naught. Yeah, C naught is 1. So you will be having 1/4. Cr max is equal to 1/4 and your Cs max is equal to 3/4. बरोबर? Now please draw the graph. Suppose if I am dividing here. Okay, this is somehow qualitative diagram. यहाँ पे this will be your concentration profile for Cr, and this will be your Cr max. Okay, and this will be your concentration profile for, सही है, 1/4. Yes, it's Cs, and this will be your, ये लाइन जो रहेगी और Cs max रहेगा. ओके, अभी आई एम गिविंग यू सेकंड एग्जांपल, जहाँ पे मैंने बोला था जो 2016 में आया था, गेट 2016 वाला, वहाँ पे क्या था डेटा में? A gives R and here A gives yes, K1 is equal to 1 था, K2 is equal to 1 था, so that's why you got this profile. बरोबर? कौन सी? दिस प्रोफाइल, ये वाला. ओके,
दिस वाज दैट क्वेश्चन. अभी एक और ड्रॉ करो. सपोज यू हैव second, just for practice, A gives R and A gives S. Here it is 3, here it is 1. Okay, and this is reversible reaction. यहाँ पे आ रहा है it is 3 से और यहाँ पे back आ रहा है it is 1 से. So what will be your concentration profile? Anyone? जो मैंने पढ़ाया please use that concepts. Okay, please tell me what is concentration profile. The reaction is reversible. Vitali? Sir, first A will decrease and then will increase. Huh? No. This will not be there. See, the profile will be like, यहाँ पे तुम्हारा CA you are saying first did it decrease, right? And बाद में increase भी होगा, okay? ऐसा. So you will be having a combined effect. वो कैसे आएगा? Wait, I will draw. यहाँ पे your CA will not consume totally, okay? यहाँ पे क्या होगा? Suppose if I am drawing here, it is in between. Wait. Okay, यहाँ पे this is middle one and this is upper one. तो यहाँ पे क्या होगा? Your CA का concentration will not completely go to 0. It will be like in between air hanging. This will be your CA profile. It will not go here. Okay, this will not like this. ऐसा नहीं रहेगा. It will stop in between because it is reversible reaction. Okay, and दूसरा is what? Your this reaction is divided into 1/4 and 3/4. So you will be having same concentration, right? यहाँ पे CR का concentration will be half हो जाएगा. Suppose if I am writing here, this is one part, this is 2, this is 3 and 4. So your CS का CR का concentration will increase up to this level, okay, CR, and your CS का concentration will up to this level, that is CS. No one will achieve this maximum level, right? समझा? And your A will decrease and it will be staying here only up to half or in between because there is a reversible reaction. अभी इस concentration profile में anyone has any doubt? Sir, once can you repeat for this example? Okay, see यहाँ there is a reversible reaction. Okay, in reversible reaction क्या होता है? Rate of formation of forward reaction भी रहता है and there will be rate of formation of backward reaction. Rate of formation of A, that is backward reaction. दोनों reaction रहेगी. Okay, so अगर तुम्हारी रिएक्शन ऐसी होती जैसे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया पहले, दिस इज योर इक्वेशन 1. यहाँ पे क्या हो रहा था? योर ए वाज कंज्यूमिंग टोटली. ओके, पूरा ए कंज्यूम होता है, दैट मीन्स योर ए का कॉन्सेंट्रेशन विल रीचेस टू 0. अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा एट टाइम टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बरोबर. बट यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ओनली देर इज कंजम्पशन, यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारा प्रोडक्शन भी हो रहा है, बरोबर. बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है. तो तुम्हारा सीए जो है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा बट एट दैट सेम टाइम फॉर्मेशन भी रहेगा उसका कुछ, तो इट विल नॉट गो टू 0. यहाँ पे 0 तक नहीं जाएगा ये कॉन्सेंट्रेशन, आई राइट इन ग्रीन. ये ऐसा 0 तक नहीं जाएगा, समझा? एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिट इट विल बी हैंगिंग इन बिटवीन, मिडल में कहीं तो ये हैंग करके रहेगा. एंड ये सी आर एंड सी एस जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन है इसका भी ये टॉप लेवल पे नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो टू हायर लेवल, ये भी इन बिटवीन हाफ के नीचे ही रहेगा, समझा? सी आर पूरा फॉर्म नहीं होगा, सी एस भी पूरा फॉर्म नहीं होगा एंड सी ए विल नॉट कंज्यूम टोटली. ओके, सो यू विल बी हैविंग दिस प्रोफाइल ऑफ सी आर. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विल इंक्रीज एंड इट विल बी नॉट लाइक यहाँ पे कैसे, सपोज आई एम अज्यूमिंग 0.5, तो ये 0.5 का 24 मतलब 1/4 हिस्सा, दिस इज योर 1/4 एंड दिस विल बी योर 1/4. तो ये टोटल क्या होगा तुम्हारा? ये 1/4 ये 4 टाइम्स रहेगा, ठीक है. तो दिस विल 1 1 2 3 एंड 4, these are 4 intervals there. यहाँ पे तुम्हारा ये ऊपर तक नहीं जाएगा, दिस विल नॉट गो हियर. वेट आई विल राइट फ्रेश.
see your CA का, this is your middle portion, this is your 75, this is your 50 and this is your 100. ओके 100 वाला लाइन, यहाँ पे इट इज 25. ओके तो तुम्हारा एक्चुअल में क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन ए का 0 तक जाता था. ओके यहाँ पे इट विल नॉट बी 0, यहाँ पे इट विल हैंगिंग इन बिटवीन, हाफ के इधर हैंग रहेगा. दिस इज योर CA. दूसरा तुम्हारा CS का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इस कंडीशन में CR इज योर 1 by, नो इट इज CR इज 3/4 राइट, एंड CS इज योर 1/4. तो तुम्हारा 3/4 मतलब यहाँ पे जाने वाला था वो, बट ये यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ ये हाफ के नीचे ही रहेगा. ये दिस विल बी योर 3/4 बट हाफ का 3/4 रहेगा. ओके हाफ का 3/4, तो दिस विल बी योर CR एंड ये तुम्हारा रहेगा 1/4 मतलब यहाँ पे रहना चाहिए था, तो ये 1/4 का हाफ हो जाएगा. दिस विल बी योर CS. दिस इज अप्रोक्सीमेट प्रोफाइल. ओके am I audible there? Hello. Yes, sir. Audible. Yes, Okay, sir, okay. audible. समझे प्रोफाइल. दिस विल बी क्या होगा, जो भी प्रोफाइल है उसका हाफ हाफ में जाएगा वो, बस, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So we'll move on to next. We'll start with autocatalytic reaction. Okay. Autocatalytic reaction. Write down autocatalytic reaction. Anyone? Can you please tell me what is autocatalytic reaction? And tell me what is real life example of it. Okay. Anyone? Should I tell? So like If when the product acts product as is catalyst work- itself. Reactant, right? It is a reaction. I am just asking. Okay. I'll tell you in detail क्या होता है actual reaction में, profile कैसे रहती है. अभी when I told you ये which was the reaction, parallel reaction. Okay. यहाँ पे नए concept सीखने को मिले ना तुम्हें? Yeah, it was similar to what you studied in your class. Similarly, you will be having some different profile वगैरह. Okay, यहाँ पे. So I'll start with this. What is autocatalytic reaction? So autocatalytic reaction is basically reaction in which one of the product act as a catalyst. You can say reactant, but I'll prefer catalyst. Reaction in which one of the product is acting as a catalyst. इसका real life example किसी को पता है? Sir, I guess we can say curdling of milk is. Yeah. Okay, that is a microbial reaction, right? Microbial fermentation. And उसमें भी example, suppose it is preparation of curd. Okay. यहाँ पे क्या होता है? You will be having A gives R using K, and this R, that is the product, is reacting again with this reactant, and you are getting R plus R. That is this. Okay, this reaction is elementary. I am assuming what and all assumptions I assumed in previous, that is isothermal रहेगा, complete mixing रहेगा, that all assumption will be applicable here. Okay, but feed may be pure or may not be pure. Okay, that assumption may or may not apply. So feed may be pure or may not be pure. I'll explain you. You have milk. Okay, you are getting curd, and ये curd you are adding in milk again. So you are having milk plus curd. You will get curd plus curd.
बरोबर है. And please match these two reactions, these are equal or not. Okay, similar. यहाँ पे क्या होगा, K1 and this is K. Okay, both are same. So for elementary reaction, if I will tell कि write down the equation for rate of consumption of A, क्या होगा, consumption of A minus RA is equal to दोनों रिएक्शन में देयर इज अ फॉर्मेशन, यू कंसीडर दिस एज अ मेन रिएक्शन, राइट. एक्चुअल में ये रिएक्शन होती है वहाँ पे. सो प्लीज टेक इट हियर, यूज K and you will be having minus RA is equal to what, K into CA into CR. This is not a reversible reaction, so this will be your equation. अभी तुम्हारा जो इनिशियली क्या रहता है, you will having CA naught. Okay, CA naught will be there and CA naught is giving you CA plus CR, बरोबर. Okay, because this is unreacted and this is your product, this is your equation. And suppose I am assuming there is a presence of R initially, so R is there in feed, so what will be your equation, that is CA naught plus CR naught is equal to CA plus CR. Okay, are you agree with this? Okay, what about others? Okay, so this will be your equation for concentration balance. Okay, so in microbial fermentation, what we are doing, this curd, we are adding curd into milk. The addition of this, what is the purpose of this addition, we are adding microbes. Okay, microbes add karte hain, that microbes will produce microbes again, and that will help to increase the rate of reaction. Okay, so this was example and that was your stoichiometry. अभी सपोज मैंने बोला है कि देर आर टू कंडीशन, इन वन R is not there, okay, and in another R is there in feed. Suppose if I am assuming R is there in feed, okay, so you will be having this equation and I am considering it as a CT, that is total concentration. So please replace here minus RA is equal to K into CA. What is CR? CR is equal to C total, or if I am assuming this is C naught, it will be C naught minus CA. Okay, this is equal to minus DCA by DT, that is reactant के लिए. Okay, now please integrate this equation with the limit T is equal to 0, concentration will be your CA naught, and time T is equal to T, your concentration will be CA. So you will be having minus DCA divided by C naught minus CA, right, into CA will be there, is equals to what, K into this integration dt, here integration will be there, 0 to T and CA naught to CA. Abhi please find out what will be your final equation. You need to do you need to separate it, 1 by CA, here 1 by C naught minus of CA, plus sign दे दिया. So what will be your numerator? Numerator will be C naught minus CA plus CA. So CA cancel, you will be having C naught. C naught is there in numerator, तो तुम्हें denominator में divide करना पड़ेगा. This will be your equation. This is KT will be there. Okay. अभी इसे integrate करो. This minus sign also there, right? This will change your limit. So 1 upon function, that is ln of function. So minus of ln of CA minus ln of C naught minus CA into coefficient of A. So this is equal to plus CA and this is CA naught. ये plus हो जाएगा, then we will be having KT. Now substitute these values there and please replace C naught minus CA
after getting the final result, please replace C naught minus CA is equal to CT. Not now. Okay. We'll have ln of CA naught CA naught divided by CA will be there, and दूसरी टर्म you will be having ये, तो यहाँ पे रहेगा प्लस ln ऑफ C naught minus CA divided by C naught minus what will be that second term, C naught minus CA naught or C naught minus CA is equal to KT C naught. The C naught will be there, so you will get this equation ln of CA naught upon CA, and this will be into, no, something is mistake, this will be opposite of it, C naught minus of CA divided by C naught minus of CA naught. यहाँ पे will be having minus sign, so KT C naught. So are you getting this answer? That is ln of CA naught divided by CA, and this is CR divided by CR naught is equal to KT C naught. Are you getting this answer? Okay. Now तुम्हारा first order reaction, when you have first order reaction A gives B using K, so you are having minus of RA is equal to K into CA. So what was your equation? Ln of CA naught upon CA is equal to KT. Now you compare here, when you are having A plus R gives R plus R, यहाँ पे what is change here, minus of RA is equal to K into CA into CR is there, and final expression में क्या है, ln of CA naught upon CA तो है ही, KT भी है, you will be having an additional term CR divided by CR naught, and this is C naught. समझा? ओके, बस ये एडिशनल टर्म आ गए. नाउ if I am telling you to draw the graph between these y is equal to m into x, here your y will be whole this term and your x will be time, so you will be having slope that is k c naught, so you can easily draw that graph. And what is c naught? C naught is basically CA plus CB, no, CA plus CR. Okay, or you can consider CA naught CR naught, that will be easy because initial concentrations you know what is there in feed. अभी ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा ln of CA naught CA CR CR naught. ओके, यहाँ पे you will be having T, तो ये तुम्हारा स्लोप रहेगा K into T, वहाँ पे C naught भी रहेगा. Now can you please tell me what will be the rate with respect to time? Important, right? Minus RA with respect to time, what will be your profile? Any idea? Any case? ओके, सो मुझे बता A प्लस R गिव्स R प्लस R. ओके, जब यहाँ पे 1 मोल है ये, दिस विल बी योर 1 मोल. ओके,
if I am telling you this is 1 mole and this is your 0. using stoichiometry it is 1 okay, और यहाँ पे तुम्हारा it is only 0.05. so which one? This is feed. Which one will be your limiting one? Limiting पढ़ा है मैंने. R. R will be okay. तो तुम्हारा A कितना रिएक्ट होगा? Only 0.05. Okay. So if R is there in feed, but it is in very less amount, तो क्या होगा? Your rate will be slower or rate is low. Slow. So your initial rate will be less. Okay. बाद में अगर you have 1 mole of A or 1 mole of R है, so what? That will be faster reaction. So rate will increase. Okay. And this is first condition. I'll write here. This is first condition. This is second and this is third. Last में क्या होगा? Your A will decrease. Okay. अभी तुम्हारा A is 0.05 है and your R is 1. Okay. So rate क्या होगा? Rate will be क्या होगा? Anyone? Can you please Decrease guess? होगा. Decrease होगा. That will be low. Okay. So initially it is low, then it is increasing and again it is decreasing. Okay. So this is your rate with respect to time. Any doubt here? Please try to guess here. Okay. This will improve your imagination power. Okay. कैसा रह सकता है? अभी मेरे को बताओ. Here rate is slow. Reaction is slow. Rate is low. यहाँ पे your this will be your fast reaction and again it will be slow reaction. I am writing here A, B and C. These are 3 zones. Zone A, B and C. Could you please tell me what is reason behind rate? When it is initially low, then it is fast and it is low. Catalyst formation. Okay. First, see here low, high and this low. तो यहाँ पे क्या होगा? Initially rate of reaction is low. Why? Because concentration of R is less. R क्या है? Feed में कम है. That's why rate is low. Okay. यहाँ पे second is B. High क्यों हुआ? Because CR increase हो गया, CA भी increase हो गया. दोनों same थे amount में. That is high. And what is the reason behind low in zone C? Because less amount of A. Anyone has any doubt here अभी? पहले जोन में R लेस था इसलिए रिएक्शन कम होगी. फाइनल जोन में A लेस है इसलिए रिएक्शन स्लो होगी. एंड B जोन में रिएक्शन इज फास्ट बिकॉज दोनों का अमाउंट इज इक्विवेलेंट. एनी डाउट हियर? Should I move? Okay. Mitali, Kaushik, Sai Kiran. Any doubt? Okay. ठीक है. This was your rate with respect to time. Okay. Please write here. This is very important, right? Rate with respect to time. Okay. Now I'll draw second graph. Rate with respect to concentration of A. Now please draw the graph. I am expecting this from you. Here rate. मैंने तुम्हें रेट बताया है और तुम्हारा बस सिंपल लॉजिक रहेगा. क्या? टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा CA डिक्रीज होगा. ओके. सेम फंडा हियर.
what will be your concentration this rate versus concentration profile? This is your CA naught initially. Can you please guess? गलत होगा तो I'll correct it. First it is increasing then decreasing. So do you mean it is same as one which I draw earlier? Okay, I'll draw. किसी को कुछ guess है क्या? Please try. Please increase your imagination power. Okay, this will help you while working in industry. What will be there in reactor? क्या हो सकता है? What is the probability of that? Anyone? Sir, it will be mirror image of first one, I guess. Okay, that is good guess. Okay, so I'll write initially you have rate is low. Okay, but मुझे बताओ rate तो कम था, but will it be zero or it will be having some value? Some Will it value, start sir. from zero? Okay, so it will be having some value. It will not start from zero. Okay, so I'll draw a graph. It is low, then it was when you have concentration high, so it was increasing, and then it is decreasing, and it will tend to zero. 10 to 0. I am writing here. It is tending to 0. I am writing. See, I have shown here dotted line. Okay, dotted line. So path is not clear here. Please be clear with your concepts. Okay, dotted line की use करते because we are showing we don't know what is actually there. Okay, that's why we are using dotted line. अभी this is your profile, right? Concentration versus CA. Okay, ये तो हो गया तुम्हारा profile. What is the shape of this profile? It is bell shaped curve. Bell shaped curve. Okay, GATE 2010 2 marks question. समझा? Anyone has any doubt here now? Concentration profile कैसी रहेगी? Should I move? Okay. अभी हमें तो पता चल गया यहाँ पे you are having CS minus RA maximum, and now use the concept which I told you in yesterday's class, maximum minimum. Maxima और minima का concept क्या था? If you are getting maxima और minima, okay, तो क्या होगा वहाँ पे slope is equal to 0, right? यहाँ पे slope क्या है? Slope is change in y upon change in x. क्या है इधर? d by dca of minus RA बरोबर is equal to 0. What is your minus RA? That is k into CA into C not minus CA. क्या करोगे? You will differentiate with respect to A. So d by dCA of minus RA. Please tell me what is the condition? क्या आएगा? K. If you differentiate, ये CA और C naught दोनों है. C naught is constant minus CA का square मतलब 2CA is equal to 0. So what is your condition here? C naught is equal to twice CA or CA is equal to C naught divided by 2. This is your condition for minus RA to be maximum. अभी मुझे बताओ based on your mathematics का concept, रेट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा कैसे पता चला तुम्हें? यू डबल डिफरेंशिएट Concavity. या ओके कॉन्केविटी है और इफ यू डबल डिफरेंशिएट d by dc of minus RA, okay, this is 2 and this is 2,
सो तुम्हारा आंसर विल बी निगेटिव। समझा? ओके, ये इक्वेशन तुम्हारा क्या था कि दिस पहला डिफरेंशिएट का इक्वेशन वाज k इंटू सी नॉट माइनस ट्वाइस सी ए। ओके, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा तुम्हारा आंसर? इट इज माइनस 2 और ये k रहेगा -2. ओके -2k, तो निगेटिव आ रहा है आंसर। दैट मीन्स यू आर गेटिंग मैक्सिमा। कर से भी देखो, चेंज इन स्लोप क्या है, पहले बड़ा देन निगेटिव, तो चेंज क्या आएगा? चेंज इज बेसिकली क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर। तो फाइनल क्या है? फाइनल कम हो रहा है, इनिशियली का ज्यादा था, दैट इज हाई, नो इट इज लो माइनस हाई, कम हो रहा नहीं इधर, तो यहाँ पे यू विल बी हैविंग मैक्सिमा। ओके, हो गया। नाउ प्लीज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ माइनस आर ए मैक्सिमम। रेट मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी? के इंटू सी ए इंटू सी आर। अभी मुझे बताओ, यू हैव कैलकुलेटेड कि सी ए नॉट प्लस सी आर नॉट, और ऐसे सी नॉट इज इक्वल टू सी ए प्लस सी आर, एंड तुम्हें पता चल गया कि सी ए इज सी नॉट बाय 2, सी नॉट बाय 2, दिस इज सी नॉट, तो व्हाट इज ऑफ सी आर? सी आर इज इक्वल टू सी नॉट बाय 2। आर यू गेटिंग दिस आंसर? सो फॉर मैक्सिमा और मैक्सिमम रेट टू बी मैक्सिमम, क्या कंडीशन है तुम्हारी? सी ए इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू सी नॉट बाय 2। आया? सबका आंसर आया? प्लीज रेज योर हैंड। कौशिक, ओके, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो तुम्हारा माइनस आर ए मैक्सिमम क्या आएगा? दैट इज योर k इंटू सी नॉट स्क्वेयर बाय 4। ओके, नाउ प्लीज पुट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो। कहाँ पे? ये ग्राफ में दिखाना है अपने को। व्हाट इज योर दिस सी आर मैक्स? दैट इज इक्वल टू सी नॉट स्क्वेयर बाय 4। समझा? एंड दिस वैल्यू विल बी सी नॉट बाय 2, ओके, इज इक्वल टू सी ए is equal to CR. Please add these 2 points. Okay, what is your maximum concentration and what is your condition, right? CA is equal to CR is equal to C naught by 2. Abhi, please draw the graph between 1 by minus RA versus CA. क्या आएगा? What will be that? बस मैंने एक्सिस चेंज कर लिया। इनिशियली तुम्हारा रेट क्या होगा? यहाँ पे सी ए नॉट, योर रेट इज लो, so 1 by rate is maximum, so it will start from here, it will go, this will be like this. Okay, cup shape and bell shape, you have to remember cup shape and bell shape. What is your progress? This is a progress of reaction. Direction क्या रहेगा इसका? This will be your direction, progress of reaction. Okay, and what will be this 1 by minus RA? Minimum is 4 divided by C naught square. ये भी कर तुम्हें याद रखना है। ओके, यहाँ पे सेम कंडीशन आएगी, मिनिमा आएगा d by dc ऑफ 1 by minus RA is मिनिमा आएगा इसका। ओके, आर यू क्लियर विथ दिस ग्राफ? I have drawn 2 graphs here. This is second one and this is first one. उसके साथ इनिशियली मैंने ड्रॉ किया था, दिस वाज योर 0th. ओके, should I move forward? Okay,
What about others? Okay, ठीक है. Now suppose इसी रिएक्शन में प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्या एक्चुअल में रिएक्शन में व्हाट इज हैपनिंग देयर. ओके, यू नीड टू क्लियर विथ योर कंसेप्ट सो दैट अगर तुम CRE2 पढ़ते हो तो यू विल बी हैविंग अ एडेड एडवांटेज कि तुम्हारा CRE1 इज वेरी वेरी स्ट्रांग, तो तुम CRE2 को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दैट एंड यू विल बी हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर अदर स्टूडेंट्स. ठीक है. अभी योर मैंने तुम्हें बोला था योर C total is equal to CA naught plus CR naught is equal to CR plus CS. ठीक है. Now please tell me, suppose if R is not in feed, R is not in feed, तो क्या आएगा? Your CR naught will be equal to 0, CA naught is equal to CR and CS. समझा? Okay. So what will be your minus RA? Minus RA is equal to K into CA into CR. What is your CR? That is K into CA. जैसा का जैसा, this R will be your CA naught minus CA. Okay. Now if you calculate equation आ जाएगा. And here बस तुम्हारा क्या हुआ? CT has been replaced by क्या? CA naught. समझा? CT CA naught. अभी what will be your minus RA maximum? तो कंडीशन क्या आएगी? इफ यू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन तो यू विल गेट, वहां पे तुम्हें मिला था CA इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू CT/2 आया था, बट हियर यू विल बी हैविंग CT क्या हुआ है? CA नॉट से रिप्लेस हुआ है, सो यू विल बी हैविंग CA नॉट डिवाइड बाय 2. समझा? दैट इज CA नॉट डिवाइड बाय 2. And what is your minus RA maximum? Minus RA maximum will be CA naught square by 4. Okay. Now please draw the graph. Should I draw here only? इसमें ड्रॉ करें? हियर अभी तुम्हें पता है कि R फीड में नहीं है, सो व्हाट विल बी योर इनिशियल रेट? व्हाट विल बी योर इनिशियल रेट? दिस वाज योर इनिशियल प्रोफाइल. पहले तो ऐसा था तुम्हारा कर्व. ओके. नाउ व्हाट इज योर इनिशियल रेट? इफ R इज नॉट देयर, R इज नॉट इन फीड, तो तुम्हारा रेट विल बी 0 रहेगा ना? 0. So curve will start from 0. Okay, this is your CA naught. So when you have CA naught, this is CA, this is what your minus RA. जब तुम्हारे पास R नहीं रहेगा तो you will be having 0 rate at time t is equal to 0 and concentration was C naught. So your curve कैसा? Curve will be right in this pink वाला note. Okay. Okay. So this will be your profile. पहले केस में क्या था तुम्हारा? That is C नॉट स्क्वायर बाय 4 था. अभी मुझे बताओ C नॉट इज इक्वल टू CA प्लस CA नॉट प्लस CR नॉट था. अभी तुम्हारा CR नॉट 0 है, तो तुम्हारा CA नॉट कम ही रहेगा ना C नॉट से. ओके. CA नॉट तो कम ही रहेगा C नॉट से, बिकॉज इनिशियली क्या था? CR नॉट प्लस CA नॉट इज इक्वल टू C नॉट था. ओके, सिंपली मैथमेटिकल अरेंजमेंट है वो. ओके, सो योर मैक्सिमा विल बी लोअर देन what we got in previous. This will be your curve here ऐसा, and this is what your maxima value. ये क्या रहेगी? That is CA not square by 4. समझा? कुछ डाउट? And
पहले तुम्हारी कंडीशन क्या थी? इन प्रीवियस केस यू हैड दिस वाज योर मैक्सिमा, जहां पे योर सी आर इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू सी नॉट स्क्वायर बाय नो क्या था? सी नॉट बाय 2 था। ओके, दैट इज योर सी नॉट बाय 2। अभी तुम्हारा क्या रहेगा? सी ए नॉट बाय 2 है, तो सी ए नॉट बाय 2 मतलब इसका एग्जैक्टली हाफ में रहेगा, ये हाफ में रहेगा, एंड दैट विल बी a bit initial, or I'll say that will be that is coming earlier as compared to this initial that C R present वाला condition. Okay, so यहाँ पे this will be your this point. Okay, तो मैं बोलूँगा इसको अगर zoom करता हूँ, if I am zooming it, तो this is your graph. Suppose यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है C naught square by no, this C naught by 2, C naught by 2, तो तुम्हारा सी ए नॉट बाय 2 वाला विल बी यहाँ पे। ओके, सी ए नॉट बाय 2, तो पहले कौन सा आएगा? दैट विल बी योर सी ए नॉट बाय 2 वाला। ओके, आई हैव रिटन हियर दिस वाज योर पॉइंट एंड दिस इज योर इज इक्वल टू सी ए। कुछ डाउट है इसे इसमें? ओके, अभी यू ड्रॉ 1 by minus RA versus CA. It will be exactly opposite. Okay. And सभी ग्राफ में you need to show your progress of reaction. Direction क्या रहेगा तुम्हारा रिएक्शन का? इसमें your progress was like this. Okay. यहाँ और ऊपर यहाँ पे your progress was this direction. बरोबर? This is your progress. अभी यहाँ पे what will be your progress? ये that is this is your progress. बराबर ना? सी ए नॉट से सी ए की तरफ जाएगा, यहाँ पे प्रोग्रेस विल बी दिस प्रोग्रेस, यहाँ पे भी सेम रहेगा। ओके, सी ए नॉट बाय 2 रहेगा। अभी किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? No, sir. ओके, नाउ अभी मैंने सब पढ़ा दिया है। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी प्रोफाइल विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्शन। यहाँ पे योर एक्स ए विल बी देयर, यहाँ पे योर 1 by minus RA. ओके, प्लीज note down 1 by minus RA versus XA. Is it a bell shaped or will be cup shape? Cup shape. कप शेप। बाकी सभी का Cup shape, sir. okay. Initially you will be having rate is lower, so rate अगर लो होगा तो you will be having minus RA maximum रहेगा। okay, XA is equal to 0 पे, 0 पे you I have shown infinite. okay, वहाँ पे and ये decrease होगा, this will be your progress of reaction and this will be your concentration profile. अभी and what will be this? अभी मेरे को बताओ, I have calculated कि CA is equal to CA naught by 2. Okay, please tell me what is XA here. XA क्या रहेगा? XA is equal to 1 minus CA divided by CA naught. Please substitute CA there. क्या आएगा? 0.5. Okay, so your maximum rate will be at 0.5. XA is equal to 0.5 maximum rate. Okay, and 1 by minus RA उस टाइम पे क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। इसका अपोजिट यू विल बी हैविंग माइनस RA वर्सेस XA। ठीक है, दिस विल बी योर बेल शेप। XA is equal to 0.5. Please show the direction of progress. Okay, this will be your curve. अभी यहाँ पे तुम्हें कुछ रट्टा करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट का यूज करना है एंड तुम्हें जो भी बोला गया है, बट प्लीज बी केयरफुल वाइल
ड्राइंग ग्राफ, उसमें क्या करना है, तुम्हें चेक करना है व्हाट इज ऑन एक्स, व्हाट इज ऑन वाई, बिकॉज दिस विल बी आइदर बेल शेपेड और इट विल बी कप शेपेड. ओके, तो इन दोनों में से ये आएगा, बट यू नो टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज ऑन वाई एक्सिस. ठीक है. ओके, so please tell me what you learned new in this session. कुछ नया होगा तो, and please note that points because that will be important. What are new concepts? Anyone? It's like we got to know how to draw this concentration profiles graph. Okay, Earlier, concentration. Okay, then next. What are the conditions, right? Conditions for maximum or minimum rate. Okay, then how it is varying with respect to time. Okay, and what are actual values. Okay, what is your condition to milk and actual values. Okay, but most important is your assumption and your imagination. You need to imagine ki what will be my graph when I am considering assumption r is not there and r is there. Okay, based on this you need to do assumption, and using this you need to draw concentration profile. Okay, so have you solved that question which I have given you in last class? Gate 2000, I guess that was 2017. Yes, sir, solved it. Okay, so I'll tell you in quick. So वहाँ पे क्या था, you were having constant volume reacting system, right? Isothermal reaction. Then A plus B was giving you R plus S, जहाँ पे you have A, B and S are non-condensable. This R is only condensable. Okay, condensable. And इसका saturation pressure was given. Saturation pressure was for R, it is 40 kilopascal, right? Initially, equimolar amount of A and B was there, equimolar. Okay, and तुम्हें बताया गया total pressure was 100 initially. तो equimolar होगा तो what will be your PA bar and PB bar, that is partial कितना रहेगा, equimolar है 50-50%, so PA will be 50 kPa and PB will be your 50 kPa. Then initially concentration was given, Ca naught is equal to Cb naught is equal to 12.5 moles per meter cube. इसके बाद you are having this rate equation minus of Ra is equal to 0.08 Ca into Cb moles per meter cube per second. Okay, now they are asking you find out time at which R will condense. So when we will start mass transfer, I'll tell you कि saturation pressure is a maximum pressure, maximum partial pressure up to which any substance can be there in this gaseous or you could say vapor form में रह सकता है. Okay, suppose you are air में क्या है, you have moisture plus you have pure air, right? Or I will say oxygen. Okay, so it has some concentration, and in gas state we are writing concentration in terms of pressure. Okay, so total pressure क्या रहेगा, it will be total is equal to ये moisture का pressure plus oxygen का, so oxygen plus pressure of moisture, and these pressures are called as partial pressures. Okay, अभी जब this concentration of this PA जो अपना moisture का pressure था, if it is equal to saturation pressure, that is maximum amount of moisture is there in air, so at that time क्या होगा, this moisture will start
condensing, right? Condensing. So I'll tell you in brief here. Baki when you start mass transfer, we will clear it in detail. So when pressure will be equal to this partial pressure is equal to saturation pressure, at that time there will be condensation, or else water will start that R will start condense. So you have reaction A plus B gives R plus S. Okay, at time t is equal to 0 क्या था, you were having this is 50 kPa, 50 kPa. okay, ये क्या था 0 0. now at time t is equal to t, suppose कोई भी टाइम था in between, t1 ले लिया, you are having concentration suppose 30 है, this is your 30, तो what will be that, this is 40, this is 20 20. समझ रहा है? ओके, सपोज अभी तुम्हें क्या बोला है, when this R का concentration will be 40, right? 40 होगा तभी वो condense होगा ना, 40 होगा, at that time it will condense. So if it is 40 40, then you will be having this 10 and 10. okay, at time t is equal to t, and you need to find out this time. okay, so for that you know what is conversion, XA is equal to 1 minus CA divided by CA naught. For gases it is 1 minus PA divided by PA naught. What is PA naught you know, and what will be the PA at time t, at time t, this is your 10. तो ये पूछ रहे कि when R will become 40, at that time this PA will become 10, PA or PB will become 10, and उस time you need to find out that time, you need to calculate that time. So what is 1 minus PA? PA is what, your 10 divided by this is 50, you will be having conversion 0.8. conversion आ गया. Now you know what is minus RA is equal to, it is given 0.08 CA into CB. okay, abhi please tell me which one is a limiting reactant here, which one is limiting one? No limiting reactant. okay, both of these are limiting or both of these are in excess, so no limiting and no excess will be there. so मैंने तुम्हें बोला था when there will be no limiting and no excess at each and every moment, at each and every moment, or at any location, or location, conversion of A जितना रहेगा that will be your conversion of B, and concentration of A जितना रहेगा that will be your concentration of B. this was your condition. so क्या बोला था, CA is equal to CB, so 0.8 into CA square, बराबर, CA is equal to CB है तो, and this is your second order reaction, तो क्या आएगा, XA divided by 1 minus of XA is equal to K into CA naught into T, right? this is your second order reaction equation. I am writing directly. okay, you don't need to solve this equation in exam. okay, now what is XA, you know, 0.8 divided by this is 0.2 is equal to 0.08, Kq value is given. what is your CA naught, that is your 12.5 into T. okay, आ गया. so your time will be 4 divided by 0.08 into 12.5, so you will be having 4. what is your unit of this time here, it is given second. okay, please be careful while writing units also. okay, it may say कि ये 4, here answer is 4 second, but suppose in answer there is 4 minute is also there and these 4 second is there, so please be careful while writing this unit. so this is your answer, that is 4 second. okay, तो सभी को अभी के कंसेप्ट जो है क्लियर है? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, ठीक है. सो हम कल इन नेक्स्ट क्लास व्हाट विल स्टार्ट विथ रिवर्सिबल रिएक्शन. सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, ठीक है, थैंक यू. Thank you, sir.